Hello everyone, how are you doing? I hope you're doing fine and taking good care of yourself, isn't it? Very good. Welcome back to the Unpowered Room. Hi kids, Feather Cap, and I'm back with another topic that is farm animals. It's a very interesting topic और आप बहुत कुछ सीखेंगे इससे. चलिए start करते हैं. Farm animals. Okay, so here we have so many animals with us. See, there are so many animals. But what are farm animals? Farm animals क्या होते हैं? पता है आपको? I will tell you. Farm animals वो होते हैं जिन्हें हम अपने साथ रेस करते हैं for agricultural purpose. For agricultural purpose मतलब जिनसे हम बहुत सारा काम करवाते हैं और उनको फिर खिलाते पिलाते भी हैं, ठीक है, उनकी देखभाल भी करते हैं और उनसे काम भी करवाते हैं. ओके, वो होते हैं फार्म एनिमल्स. उन्हें बोलते हैं हम फार्म एनिमल्स. सो डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है. देयर इज पेट एनिमल्स, देयर इज फार्म एनिमल्स एंड देन देयर इज वाइल्ड एनिमल्स. टुडे वी आर लर्निंग फार्म एनिमल्स जो हमारे साथ रहते हैं इन फार्म और हम उनसे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वर्क कराते हैं. ओके, चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से एनिमल्स होते हैं वो. फर्स्ट वन इज शीप. फर्स्ट वन इज शीप. तो शीप हमारे किस काम आते हैं? डू यू नो? यस, शीप गिव्स अस वूल. शीप गिव्स अस वूल. हमें वो वूल देती है जिससे हम अपने स्वेटर्स बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज डोंकी. नेक्स्ट इज डोंकी. डोंकी कैसे करता है? रेचू रेचू है ना, करता है ना. तो डोंकी हमारे किस काम आता है? डोंकी हमारे लिए थोड़ा सा सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाता है, ठीक है. दैट मीन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस वी यूज डोंकी. ओके, नेक्स्ट इज बफलो. Next is buffalo, and you all know buffalo gives us milk. Buffalo gives us milk. हमें milk देती है वो. Okay. Next is cow. Now we all know this that cow also gives us milk. Cow से हमें milk मिलता है और उसे हम पी के healthy और strong हो जाते हैं. Okay. Next is duck. Next is duck. And next is hen. This is hen. You know, hen lays eggs. Hen हमें eggs देती है ना. That is very healthy for us. Hen give us eggs. Okay. Then dog. This is dog. Dog हमारे लिए क्या करता है? Dog watches the house for us. Dog हमारी देखभाल करता है, ठीक है. और जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, सो रहे होते हैं, तो डॉग पूरा वॉच करता है हाउस कि कोई भी लोग बाहर से छुपके से ना आ जाएं, ठीक है. तो वो कौन करता है? वो डॉग करता है. अगर कोई भी लोग बाहर से आते तो डॉग क्या करता है? डॉग लाउडली बार्क करने लगता है. कैसे बार्क करता है? यस, वेरी गुड, लाइक दिस. तो ऐसे ही डॉग लाउडली बार्क करता है और उससे सब लोग भाग जाते हैं, ठीक है. The dog watches the house for us. Next is the camel. Next is camel. Camel क्या करता है? Again, camel भी transportation में हमारी help करता है, ठीक है. Next is horse. Horse. Horse भी transportation में हमारी help करता है. जब भी हमें कोई सामान one place से दूसरी place पर transfer करना होता है, we use such animals: horse, camel and donkey. Okay, then is goat. Next is goat. You know, goat gives us milk. Yes, but we only heard about cow and buffalo, but goat also gives us milk. Okay, and the last one is cat. Last one is cat. Cat doesn't give us anything, but it is a friend of us. Cat is a friend of us, and whenever there is a cat around us,
हम कैसा फील करते हैं? हम बहुत फ्रेंडली फील करते हैं, ठीक है, हम बहुत फ्रेंडली फील करते हैं बिकॉज कैट एक ऐसा एनिमल है जो हमें फ्रेंड मानता है. ओके, सो कैट, goat, horse, camel, dog, hen, buffalo, donkey, duck, cow and sheep. These all are farm animals. These all are farm animals. So don't forget these animals. Okay. Now come to the next page, that is match two halves of the same farm animal. You have to match the other half. जैसे कि first is this part and इसका पीछे वाला part is missing, right? So we have to find where is the other half of the animal. चलिए आप मेरी help करेंगे सब इसको matching करने में. First one is sheep. First one is sheep. चलिए बताइए, which is the other half of the sheep? Do you know? Yes, the third one. We will match with the third one like this. Okay. Now sheep complete हो गई है, पूरी हो गई है. चलिए. Next is horse. Next is horse. Now find which one is the other half of the horse? Second last. Yes. We will go and match with this. Next is duck. Next is duck. Find where is the duck? The last one. We'll match it with the other half of the duck. Next is camel. Next is camel. Where is camel? Over here. Second one. We will go up and match with the camel. And last one is goat. Last one is goat. Now goat is this one. The other half of the goat is this one. So like this we have joined these animals and completed them. Okay. So I hope you have understood that what are farm animals. समझ में आया आपको? आप सबको farm animals learn करने हैं and repeat करने हैं. I will see you in the next class. Till then, bye bye. Happy learning.